सुंदर साथ जी, परमहंस श्री जुगलदास जी महाराज मनमोहन रसानंद सागर में परमधामना 25 पक्षना चितवननी प्रेमभयी रीते आपने याद दिवડાવે છે। परमधामनी चितवन में अन्य सौ परमहंस महाराजोए अनंत प्रकारनी गणतरी करीने परमधाम दर्शावવાનો प्रयास कर्यो छे, परंतु जुगलदासजी महाराज आपने क्याय पण गणतरी में अटकाव्या वगर मात्र लीला में डूबाड्या छे अने ए प्रेममयी प्रीतम साथेनी अष्टप्रहर मारी लीला अने ए लीलानो रसास्वाद करावता कही रह्या छे, तीजी भोमना जरोखेथी चांदनी चौक में अपार सुख लीधा अने ए अपार सुख लीधा पछी ज्यारे एमा आपणे सौ रूहो त्रिपित थया त्यारे एक आंखना इशारे बधाने पोतपोताने ठेकाणे पहोंचवानो आदेश थई गयो। आपणे प्रीतमने लई अने देहलाननी मध्यमां आव्या अने प्रीतमने सिंगार सजावવાનું नक्की પોતાના દિલના ઉમંગો મારફત એને આપણે સિંગાર કરાવવાનું શરૂ કર્યું। कई सखी अद्भुत जुगत की पागड़ी चित चोर रंग की सर्व मोहन बांधती है, पेच पे पेच सरस लगाड़ी ने प्रीतमना सर ऊपर सुंदर पाग अने पण केवी पाग बाधी सारंगी, एक तरफ ऊंचो भाग एक तरफ नीचो भाग, पाछळ एक मोटू फूमतू अने एना उपर सुंदर दुगदुगी जाने मोतीओनो चंद्रकार एवो चमकी रह्यो छे के अनंत कोटि सूर्य एक साथे प्रीतमना पाग उपर जाने के चमकी रह्या छे। ए दुगदुगी में जेटला रंगना रत्नो छे एम लागे छे कि एटला रंगनी बीजलीओ चमकी रही छे। एनी साथे साथे मध्यमा सुंदर कलंगी ए पण एक पींछाथी फरनी कलंगी अने एनी अंदर अनंत प्रकारना रत्नो जाने एक साथे कई सूर्य प्रीतमना पाग उपर चमकी रह्या छे। प्रीतमना कानोमां सुंदर मजाना कर्णफूल लटकी रह्या छे अने एनी चारे तरफ नंग जड़ेला छे, जैसे एक ही सूर्यमंडल में अनंत कोट किरणें गुलकृत करके ऊपर श्रवण दोनों के चुमक मोतियों के लटकत है। मारा प्राण प्रीतमना कानोनी अंदरना लटकता ए झुम्मरनी अंदर अनंत रंगो एना किरणों एवी रीते जाने गोलाकृत थईने चमकी रह्या छे अने मने एवो जाने लागे छे के मारा प्रीतमना ए झुमकानी अंदर जे मोती लटकी रह्या छे ए मोतीओनी अंदर हूँ 12,000 सखीओ साथे जाने झूला झूलती होऊं अने ए झूला झूलवानो प्रीतमना कानोनी अंदर मने आनंद आवी रह्यो छे। नासिकामां बुलाक मध्यमा प्रीतमे बांधेली पहेरेली छे, सो दमादम ऊपर अधरो के डोलत है। ए बुलाकनु नंग लाल रंगनु प्रीतमना अधर एटले के होठ ऊपर एवुं चमकी रह्युं छे के जाणे एनी ज लालीमामां प्रीतमना
होठ और अधिक लालिमा युक्त देखाई रहा है। જ્યારે પ્રીતમ માથું હલાવે અને એ રત્ન હલે તો એમ લાગે છે કે 12,000 સખીઓ ત્યાં ડોલી રહી હોય એવું લાગે છે। એક એક રૂહના દિલમાં જાણે તીર ચુભાતું હોય, કતલ કરી નાખે એટલી સુંદર પ્રીતમની નાકની બાલી શોભી રહી છે। અને આશિક શ્રી રાજજીને વિનંતી કરતે હૈ કે આ માથું ના હલાવશો। તમે જ્યારે માથું હલાવશો ને નંગ હલે છે, મારા ચિત્તમાં એમ લાગે છે કે મારે હું મરી જઈશ। તો એ કહે છે હું તો નહીં માનું, હું તો તમારું કતલ કરીને રહીશ। રૂહોના દિલને હું મારા તરફ આકર્ષીને જ રહેવાની છું। એક રૂહને હું મારા તરફથી दूर नहीं थवा दो। अति उज्जवल सफेद रंग का जामा पहना है, मानो दूध सफेद नूर ज्योति का सागर जिमी से आसमान लो भराए रहा। मारा प्रीतम ने सफेद रंग नो जामा, उज्जवल सफेदी, जाने दूध नो सागर लहराई रह्यो होय એટલી ઉજ્જવલતા અને એની કિરણો આસમાનમાં છવાઈ ગઈ હોય એટલી સુંદરતા એ વાઘો દેખાઈ રહ્યો છે। અને જીમી સે આસમાલો માનિંદ રોશન જલ દૂધ કે ભરાઈ રહ્યો, આખું પરમધામ જાણે દૂધથી ભરાઈ ગઈ હોય એવો મારા પ્રીતમના જામાની સફેદી ચારે તરફ છવાઈ રહી છે। ऐसे गहरे जल विषे मछली फिरती है, ऐसे रात दिन 64 घड़ी रूहे बीच उस रोशन जल से फिरती। जेम सागर में माछलियों फरती होय एम मारा प्राण प्रीतमना जामाने सफेदीना सागर में आशिक रूह एवी रीते डुबकी मारती रहे छे के जाने मारा प्रीतमना वाघानी सुंदरता एनी सफेदीमांथी पोतानी नजरने हटावी ज ना सके। और चोली बदन को लिपट रही है। ये जामानो छातीनो भाग चपोचप एवं सुंदर फिटिंग में छे के जाने बदन साथे चोंटी गईली होय। और दामन चीन से कुसादे है। आगर जे दामन कमर थी नीचेनो भाग छे ए विशाल पहोळाई वाळो छे। ऐसा भासत है बुलाक करनफूल जुम्मक ने ऊपर आशिकों को बोला जो कत्ल है और लाए जो हमला है सो जामिया ने आधे अंग से माशुक को पकड़ के माशुक के खूब लिपट लिपट के और आधा अंग अपना कुसा दे। जेम प्रीतमना मुखार बिंदना ए आभूषणों सुंदरता, प्रीतमना मुखार बिंदना ए आभूषणों प्रीतमना अंग साथे જેમ રામત કરે છે અને મારા દિલની અંદર એમ લાગે છે કે જાણે મારું દિલ ચોરી રહ્યા છે। પરંતુ જ્યારે એ દામનની સફેદીમાં પ્રીતમના જામાની સફેદીમાં હું ડૂબી જાઉં છું ત્યારે લાગે છે કે એ દામન મને આશરો આપે છે કે આવી જા મારી અંદર તું સમાઈ જા। વાસ્તે પનાહ કે रूहों को कहता है मारो आशरो ले ले, मारी अंदर तू छुपाई जा जेथी के प्रीतमना मुखार बिंदना आभूषणों तारी कतल न करीश। एवो बालो मारा प्रीतमनो सफेद रंगनो जामो अति सुंदर शोभायमान थई रह्यो छे। और हीरा मानिक मोती नीलवी लसनिया के 5 हार पहने प्रीतमना गलामा 5 हार शोभित छे। सो 5 हारों ने अपने रंग से आसमान और जमीन के ताई रंग लिया है। ये 5 हारना रत्नों इतला सुंदर प्रकाशित छे जाने आसमान थी जमी सुधी चारे तरफ ए रत्नों नी ज्योत ज भराई रही होय।
જ્યાં નજર પડે ત્યાં રત્નોની જોત નજરમાં આવે એટલા સુંદર મારા પ્રીતમના ગલામાં 5 હાર શોભી રહ્યા છે। जिस हार की तरफ हेर 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 के फेर आसमान जिमी को देखते हैं तो उसी हार के रंग से रंगा हुआ बासत है। नीलबीना हार तरफ नजर जोई અને આસમાન તરફ જોઉં છું તો એમ લાગે છે કે આખું આસમાન જાણે લીલા રંગથી ભરેલું છે। જ્યારે માણેકના હાર તરફ જોઈ અને આસમાન તરફ જોઉં છું તો આખું આસમાન જાણે લાલીમાંથી યુક્ત ભરાઈ ગયું છે। પાંચો હારની એ અનંત રત્નોની શોભા અપાર અપાર સુંદર દેખાઈ રહી છે। सो गोलाकृत हार कतार बंदी है અને પાંચો હાર જ્યારે એક સાથે જોઉં છું તો એક સાથે પાંચો હારના તરંગો સારા આસમાનમાં ગોલ ગોલ ઘૂમતા હોય એવી શોભા આખું પરમધામ એ પ્રીતમના ગલાના હારના રત્નોની શોભામાં રત થઈ ગયું છે। गुरुद्वारे मुखारविंद के और तले लटकत जो दुगदुगी है सो यों कर भासत है जैसे सेना के पीछे महाशूरवीर खड़े हो गए। दरेक हारना नीचे एक दुगदुगी पेंडल અને એ પેન્ડલ એવું લાગે કે જાણે ઉપરના મોતીઓ સશસ્ત્ર સેના છે તો નીચે એનો મહાવીર સૈનિક મહાશોભાનો શ્રેષ્ઠ વડો એ નીચે એની પાછળ ઊભો હોય એવી સુંદર શોભા એ મારા પ્રીતમના દુગદુગી પેન્ડલની શોભી રહી છે। और नैन नासिका श्रवण गाल अधुर दंतन की जो किरणें हैं सो संपूर्ण किरण को चीर चली है। समग्र शोभा मारा प्रीतमना मुखारविंदनी नासिका श्रवण दांत अधूर गाल एक एक अंगमांथी એટલી સુંદર લાલીમાં યુક્ત કિરણો નીકળી રહી છે કે જાણે બાકી બધા કિરણોને પાછળ પાડી અને મારા પ્રીતમના મુખારવિંદની શોભાને ઓર અધિક ઉજાગર કરી દે। આખા પરમધામમાં મારા પ્રીતમના મુખારવિંદની શોભા છવાઈ જાય એટલી સુંદર એ કિરણો દેખાઈ રહી છે। रूहों के नैन नासिका श्रवण गाल अधुर दंतों ने जानो बादशाह अरे सॉरी महाशाह राह सड़क बांधी है। एक किरण एवी चाली जाए छे कि जाने मोटी सड़क बनेली होय इतनी सुंदर शोभा एनी देखाई रही छे। हाथों में मुंदरी प्रीतमना हाथनी आंगळीओं में रत्न जड़ित वींटीओ कड़े पहुंची बाजू बंद हाथों में आ बधा आभूषणों शोभ्या छे और बाजू बंदों में दोनों तरफ 4-4 झविया लटकती और हलती है। सो ऐसो भासत है लटकती हलती नहीं है ये वास्ते कतल मोमिनों के नाचती कूदती है। प्रीतमना बाहों में बाजूबंद અને બાજુબંધના નીચે લટકતી 4 હાર લટકતું હોય ફુમ્મક એવા શોભી રહ્યા છે જાણે કે રૂહોને શોધી રહી છે કે આવ તો ખરી હું તને જીવતી નહીં જવા દઉં તું મારા અંદર એવી ખોવાઈ જઈશ કે તારું અસ્તિત્વ સમાપ્ત થઈ જશે। પ્રીતમના બાજુબંધની શોભામાં આશિક રૂહ એવી ડૂબી જાય પોતાનું અસ્તિત્વ ખોઈ નાખે। બસ પ્રીતમના અંગ અને આભૂષણ સિવાય કોઈ વાત નજરમાં ન આવે। ज्यों ज्यों हक मुंदरी और अंगूठी हलवन करत चलवन करत है
तो यो भासत है कि मोमिनों की तरफ अपनी बुलावत है। प्रीतम જ્યારે પોતાની આંગળી ચલાવે છે, રોશને પટકે કરી અવકાશ में चरण भूखंड जामे इजार છે। એક એક અંગની રોશની પ્રીતમ જ્યારે આંગળી હલાવે છે ત્યારે એવું લાગે છે કે મને ઈશારો કરીને બોલાવી રહ્યા છે। એ મુંદરી અને અંગૂઠીમાંથી કિરણો મારી તરફ એવી રીતે આવી રહ્યા છે કે મને કહે છે આવી જા, મારી અંદર તો આવીને સમાઈ જા। વિધ વિધ સે મારી ખાતિરદારી કરે છે। आसमानी रंग पिछोरी कमर पर विराजमान है, ता पर नीलो ने पीलो बीच के रंग को पटुको बंध्यो। पीठ पाछर आसमानी रंगनी पिछोरी अने कमरना मध्यमा नीलो पीलो पटुको शोभायमान है। सो ऐसा भासत है जैसे शाम रंग घटा में नीली पीली बिजली चमके और पग में नीली इजार है। नीचे आसमानी रंगनी इजार, ऊपर सफेद रंगनो जामो, जामाना दावननी अंदर नीचेथी आसमानी रंगनी झांकी अने एना पर नीलो पीलो पटुको। आहा, एटली सुंदर शोभा मारा प्रीतमनी देखाई रही छे, जैसे नीले आसमान पर सफेद रंग की घटा छाई जाए। आसमानी आकाशनी अंदर सफेद बादल आवी जाए ने केवी सुंदर शोभा देखाय, एम आसमानी रंगना मारा प्रीतमना इजार पर सफेद रंगना जामानी इजार જ્યારે આવી જાય છે ત્યારે એ અતિ સુંદર શોભાયમાન દેખાય છે। और भूखन चरणों चार झांझरी गुगरी काबी कडुली बीच चरण कमल के झलकत है, जिनके अनंत कोट सूर्यों के समान प्रकाश है। प्रीतमना चरणना आभूषणों ए पण अति सुंदर रीते चमकी रह्या छे। एक एक नंग कोटि कोटि बिजुली समान को जोत धरत है। અને મારા પ્રીતમના એ ચરણોના આભૂષણ, એ આભૂષણની અંદર જડેલા નંગો રત્નો, એની શોભા એટલી અધિક છે કે જાણે ચારો તરફ કોટાન કોટ बिजली चमकती रहती होय। इनविद नख शिख श्रृंगार करके ऊपर सिंहासन के विराजमान भय। આવી રીતે મારા પ્રીતમને पाग थी माड़ी चरण कमलना आभूषण सुधी मैं मारा हाथे श्रृंगार करावे। एक एक आभूषण बड़ी चाव थी मैं प्रीतमना अंग ऊपर चढ़ावे अने ए अंगोनी शोभा अनंत गणी वधी जाए એટલી સુંદર લાગે છે કે ત્યાંથી નજર જ હટે નહીં। બસ મારા પ્રીતમને જોયા જ કરું, જોયા જ કરું, મારી નજર લાગી જાય મારા પ્રીતમને, એટલી હદે મારા પ્રીતમને જોયા। આંખોમાંથી એ સુંદર ચેતન ચંચલ નશીલું એ સ્વરૂપ એક ક્ષણ માટે દૂર નથી થતું। आंख मीचीने प्रीतमना ए स्वरूप ने मारा दिलनी अंदर भरी लो अने एम थाय छे के क्यारे पण आंख खोलू ज नहीं। आंख खोलू तो मारा प्रीतमनु स्वरूप आंखोमांथी बहार निकळे ने। आशिक रूह प्रीतमना आ अनुपम सौंदर्य युक्त स्वरूपमां एवी गोता खाती जाए छे, एवी गोता खाती जाए छे, एमांथी बहार निकળી જ ના શકે। એટલું સુંદર મારા પ્રીતમને શ્રૃંગાર કરાવી અને આસમાની રંગ તરફ
હું પહોંચી ગઈ અને ત્યાં સુભાન શ્યામાજીને મારા હસ્તકમલથી શ્રૃંગાર સજાવા લાગી. अब चार चार सखी ने अति महारुचि सो श्री श्यामा जी को नख सीख श्रृंगार कराए के बीच जिस श्रृंगार के माशुक बेकल बेकरार हो सब वे ही श्रृंगार कराए. मारा हाथों मैं श्यामाजी ने अंग अंग ने एवं सजावी दीधुं कि मारो प्राण प्रीतम श्यामाजी परथी नजर ज न हटावी शके. बस एक टक जोया ज करे. एने जोता ज बेकरार थई जाय. एने बाहोमां समावे लेवा माटे तत्पर थई जाय. एवी सुंदर शोभा, एवो सुंदर श्रृंगार श्यामाजी ने मैं करायो. हर श्रृंगार में जादू टोना मिलाए और सिवाय अनवट बिछियों के श्रृंगार श्यामाजी के श्री राजी के बराबर आए. बस श्यामाजी ने वधारे शू आप्યું? चरणनी अंगूठामां अने आंगळीओमां अनवट अने बिछुआ, जे राज्यना श्रृंगारमां नहीं. बाकी सर्व आभूषण जेवा मारा प्रीतमना एवा ज सुभान श्यामाजी ने अने साथे भरी दीधो जादू टोना. ए श्रृंगार ने एवी रीते सजाव्या कि मारो प्रीतम जोया ज करे, त्याथी नजर ज न हटावे. नीलीलाही को चरनिया, मारा प्रीतम ने नीली इजार, श्यामाजी ने नीली लाही को चरनिया, श्याम जड़ाव की कंचुकी, ब्लाउज श्याम रंग नो अने जड़ाव अनंत रत्नो जमा जड़तर करेला छे एवो. बाजूबंद, पांचो हार, 5 लड़ी, चंपकली, कंठसरी, चीड़, नथ, बेसर, लोलक, झाल, पांदड़ी. श्यामाजी ना गरामा 7 7 हार, गळा थी अडीने थी माडीने लांबा सुधी उर सुधी लटकता, एमां कई प्रकारनी पांदड़ी वाळा, कई प्रकारना रत्नो वाळा, 5 5 हार वाळो एक हार चंपकलीनो, कंठसरी, चीड़ नाना नाना रत्नोथी बनेलो, नाकमां नथ, बेसर अने बेसरनी अंदर पांदड़ी झूली रही छे, वेंदा, बदिया, बीज शिष्य फूल, सेथामां शिष्य फूल, बेनी फूल, बेनीनी अंदर बेनी फूल, चोटीनी अंदर चोटी फूल, कुमक हारो और नाड़े के ये संपूर्ण श्रृंगार श्री श्यामाजी को 4 सखी ने कराए. एक एक आभूषण, एक एक वस्त्र श्यामाजी ने मैं बड़ी सिद्धत थी बहुज प्रेम पूर्वक सजावीने तैयार करी दीधा. और आप 12,000 साथ ने श्रृंगार मीनो मीने करे, उनने उनको, उनने उनको. आसमानी रंगना ए मंदिरनी अंदर आपणे सौ सखीओए मीनो मीने श्रृंगार करावे. सखी एक दूजी को भूखन पहरावे, साथ श्रृंगार करके आवे, जैसा धनी जी के मन भावे. मारा प्राण प्रीतम अने मारी नजर
એકબીજા સાથે સતત મળેલી છે. આંખોથી આંખોના ઈશારો કરતા હું પ્રીતમને પૂછી રહી છું કે પ્રીતમ કેવી લાગી રહી છે? અને પ્રીતમ આંખોથી જ ઈશારો કરીને કહે છે બહુ જ સુંદર. પ્રીતમના આંખનો આટલો ઈશારો સમજતા જ જાણે મારી સુંદરતાને ઓર અધિક 4 ચાંદ લાગી જાય એટલી સુંદરતા અંગ અંગમાં ભરાઈ જાય છે. અબ श्री श्यामा दुल्हीन नख सिख सिंगार करके और संपूर्ण सुंदर साथ को कराए के वास्ते मासुक जीतने के फौज रस की लेके तरफ माशुक के चली. सुभान श्यामा जी नो पूर्ण सिंगार अंग अंग थी चस चसता वस्त्रो, नूरी वस्त्रो, नूरी स्वरूप, नूरी सिंगार અને એ શ્યામાજીનો જેવો સિંગાર એના જેવો જ 12,000 સખીઓનો સિંગાર. સૌ મનપસંદ સિંગારથી સજીને પ્રીતમ ને રીઝવવા, પ્રીતમને જીતવા જાણે ફોજ ચાલતી હોય એમ શ્યામાજીને લઈ આપણે સૌ સખીઓ દહેલાન તરફ આગળ વધ્યા. श्यामा महारानी बीच मैदानी प्रेम काम के खिली केवी लागी रही है श्यामाजी. श्यामा महारानी बीच मैदानी प्रेम काम के, आहा, प्रेम कामना मैदाननी अंदर जेम युद्ध लड़वा चालती होय एवी खिली रही है. जैसे मतंग मतवारी हाथी निशान को आगे होवे और पीछे उसका छावला चले, जेम राजा महाराजा ની સવારી આવે ત્યારે હાથી આગળ ચાલે, એના પર નિશાન હોય અને એની પાછળ સારી છાવણી સૈનિક ચાલ્યા કરે. ऐसे मस्त नवजवान हंसनी को મારી શ્યામાજીની સુંદરતા, એની ચાલ, એને રંગ ઢંગ એટલી સુંદર દેખાઈ રહી છે કે જાણે કોઈ હંસની મસ્ત છોના હંસન કે घेरे चले ऐसे चंद्रवदन मृगलोचनी घेर चली. કોઈ સુંદર હંસનીને હંસનો ઘેરો હોય એમ શ્યામાજીને સૌ સખીઓને ઘેરા બંધ ઘેરીને કેવી લાગે છે? મૃગલોચની, ચંદ્રવદન, મુખારવિંદ કેવું લાગે છે? ચંદ્ર જેવું, શીતળતા, ચમકતું, સુંદર, શાંત. મૃગલોચની, મારી શ્યામાજીના લોચન નયન કેવા છે? મૃગ જેવા, અણીદાર, લાંબા, મોટા, કજરારે, કાજલથી મઢેલા, અત્યંત સુંદર. આંખોમાં પ્રેમ કામનો રસ ભરેલી શ્યામાજી જેમ કોઈ દુલ્હીન દુલ્હાને પામવા માટે લગ્ન મંચ પર ચાલે, એની મતવાલી ચાલ, એમ મારી શ્યામાજી અપાર સુંદર ચાલથી હંસનીની માફક ચાલતી ચાલી રહી છે. આસપાસ પ્રિયાજી મહારાજ કે શોભાયમાન હુઈ અને એવી રીતે ચાલતા ચાલતા દહેલાનમાં प्रीतमनी पासे पहुंची. और प्रीतम है स्वाधीन जाके ऐसी जो श्यामा महारानी है तिनको सिर अपने के देख के अनेक बीत का घमंड करती है. मारो अक्षरातीत, मारो प्रियतम प्राणवल्लभ
જેના માથે હોય એની ચાલ કેટલી મતવાલી, એની અંદર કેટલી મોટી મોટાઈ ભરી પડી હોય. આહા, અક્ષરાતીતની અંગના છું, એનો મરાતબો ગુરૂર अंग अंग में टपकतू होय और अनेक विध के प्रेम रस का मान गुमान अहंकार रखती है. श्यामाजीना अंग अंगनी अंदर प्रेम थी भरेला मान गुमान अहंकार छे कि हूँ श्यामाजी, ओ मारा प्रीतमनी अर्धांगनी. કેટલો મોટો મરાત, કેટલી મોટી शोभा. प्रेम काम सिंध की तरंगन से उमड़ाती एंडाती है. केम चाले छे एनी चाल केवी छे, मतवाली चाल. प्रेम काम थी उभराती, प्रेम काम सिंध की तरंगन से उमड़ाती. प्रेम कामना तरंगो अंग अंग में भर्या होय अने एवी रीते मतवाली चाल चालती श्यामाजी. उन्माद नव जोबन के छिन्न छिन्न पल पल इठलाती ठिठलाती. केवुं छे, एक तो स्वरूप किशोर नव यौवन भरेलू, एमां अति सुंदर श्रृंगार, चार चांद लागी जाय. અને એવા શ્રૃંગાર સજીને छिन्न छिन्न पल पल, आहा, एक एक डगले एक एक अदामा इठलाती ठिठलाती और बीच हजूर माशुक के चली जाती है. प्रीतम ने पामवा माटे प्रीतमना तरफ आसमानी रंगना मंदिर थी चाली अने प्रीतम बैठा छे त्या सुधी ए आवे छे. कोई सखी हस्तो में छड़ियाली है અને આપણે સૌ સખીઓ શ્યામાજીની સાથે બધા એક દિલી વાહેદત્ત હોવાથી સમાન સુખ બધાને પ્રાપ્ત થાય છે. કોઈ કોઈ સખી પોતાના હાથમાં છડી પોકારતા એ લીધા છે. કોઈ ફૂલ કમલ કે लिए है, કોઈ સખીઓના હાથમાં કમલના ફૂલ છે. કોઈ રૂમાલ, પાન ડબ્બે या विध से 12,000 अपनी अपनी जुदी जुदी 12,000 सेवा लिए है. 12,000 सखियों बधाना हाथ में विध विध प्रकारनी चीज वस्तुओं श्यामाजी ने साथे साथे चालता प्रीतम ने रिझववा तरफ जाने फौज लईने श्यामाजी चाली रही है. और आगू कमल नैनी के को गावती है. कोई कोई सखी श्यामाजीना आगर आवीने कई प्रकारना श्रृंगार रसथी भरेला गीत गाय छे. लीला प्रेमनी छे, रस श्रृंगारनो छे अने ए श्रृंगार रसनी मस्ती भर्या गीत गाय छे. कोई बजावती है, कोई कोई सखी कई प्रकारना वाजंत्र बजावते छे. कोई नाचती है, कोई कूदती है, कोई फांदती है, कोई दौड़ती है, कोई भमरी फिरती है, कोई मानिंद नट के गुलांटिया देती है. 12,000 सखियों अनंत विध लीलाओं करती करती, कोई गाती, कोई नाचती, कोई कूदती, कोई फांदती, कोई वाजिंत्र वगाड़ती. बस श्याम श्यामाजी ने रिझवती, श्याम श्यामाजी ने पोतानी तरफ आकर्षती, कई प्रकारनी लीलाओं करती करती. कोई कोनिया रमती है, कोई फुंदड़ी फरती है, कोई लड़ती है, कोई भीड़ती है, कोई दोख दोख देख देख के अट्टहास हंसती है. 12,000 सखियों बस दुल्हा दुल्हन ने पोताना तरफ आकर्षित करवा माटे
બસ દુલ્હા દુલ્હન મને જ જોયા કરે. એવી કઈ વિધ પ્રકારની ક્રીડાઓ કરતા કરતા કોઈ સખી श्यामा महारानी जी की ચોપદારી કરતી है. શ્યામાજીના આગળ આવીને ચોપદારી, ચોપદાર શું કરે? હે अर्शनी महारानी, श्री ठकुरानी, श्री श्यामा जी आसमानी रंग के मंदिर से चल के ऊपर दहलान के प्राण प्रीतम को मिलने को चली है. चौपदारी करे. कोई कोई सखी चौपदारी करती है, कोई ऊपर छत्र ताने हैं, कोई आगे राह के बिछोने बिछावती है, पावड़ो बिछावे, कोई अत्तरदानी चारे तरफ अत्तर छांटे, कोई गुलाब जल छांटे, कोई पीकदानी पान खाઈને थूंकવા માટેની પીકદાની લઈને ફરે છે, કોઈ બસ્તર, કોઈ ભૂખન લીએ है. જુઓ તો ખરા મારા સાથીઓ, પ્રાણ પ્રીતમ, પ્રાણ વલ્લભ રાજજી અને દુલારી શ્યામાજી બંનેને રીઝવતા રીઝવતા, બંનેને પોતાના તરફ આકર્ષિત કરતા કરતા 12,000 સખીઓ આસમાની રંગના મંદિરથી દહેલાન તરફ ચાલી રહી છે. કોઈ સખી ફૂલન કી વર્ષા કરતી, ચારો તરફ ફૂલની વર્ષા કરી રહી છે. યાવિદ આવી રીતે શ્યામા મહારાની અલમસ્ત દીવાની નજીક માશુક દિલ જાની કે આઈ. આમ કરતા કરતા મારી શ્યામા મહારાની આપણ સૌ સખીઓ સાથે માશુક પ્રિયતમ પ્રાણનાથ એની પાસે પહોંચી. प्राणन के प्यारे ने, राज दुलारे ने, प्राण के प्यारी को, राज दुलारी को जा छिन्न देखी, ताही छिन्न मानिंद गुलाब फूल कमल के सब अंग खिल गए. दहलान में बैठेलो मारो प्राण प्रीतम सामे श्यामाजीने जोता ज अंग अंग जाने गुलाबना फूलोथी खिली उठ्યું હોય. अंग अंग थी खिली उठ्या. हाव अंदर हरख उमंग मातो ज નથી. नजर सामे श्यामाजी दुल्हन ने अपार सुंदरताथी सजेली, અને એકલી શ્યામાજી નહીં, 12,000 ને સંપૂર્ણ શિંગાર, કેવો ચિત્ત ચાહ્યો, મોહિની જેવો સ્વરૂપ ધારણ કરીને અહીંયા આગળ પ્રીતમની પાસે પહોંચ્યા. नख सीख बीज के, रोम रोम रीझ के, सिंहासन से उठ के 5 कदम चल के, दोनों कर कमल श्यामा वनरी के चतुर वनरे ने पकड़ के શું કરે? જેવા શ્યામાજીને સામે જોયા, મારો પ્રાણ પ્રીતમ સિંહાસન પરથી ઉભો થઈને શ્યામાજીને સામયું કરવા માટે આગળ આવ્યા. આગળ આવીને ચતુર વનરે, વનરે એટલે દુલ્હો, વનરી એટલે દુલ્હન, श्यामा वनरी के चतुर वनरे ने दोनों कर कमल पकड़ लिए, બંને હાથ પકડી લીધા અને મસ્કત અંક ભર કે પેદર પે, ધ્યાનથી સુંદર સમજી, બંને હાથ પકડીને શ્યામાજીને પોતાની બાહોમાં ભરી લીધી અને પેદર પે, મુત્વાતર ઉપરા ઉપરી, અધર અમૃત પી કે, શ્યામાજીના ઓઠ ઉપર અપાર ચુંબન વરસાવતા વરસાવતા બાએ અંગ સિંહાસન પર બેઠાયા. પોતાની ડાબી બાજુ સિંહાસન પર શ્યામાજીને બેસાડી દીધા. और सुंदर साथ जो संग हतो, ताको मेहर नजर से भिजाया और आनंद सिंध में डुबाया, सबों ने चित्त चाह्या मनोरथ पाया. श्यामाजीने પોતાની પાસે સિંહાસન પર બેસાડી
આ પણ સૌની સામે પ્રીતમે અમૃત ભરી નજરોથી જોતા જ જે સુખ શ્યામાજીને પ્રાપ્ત થયું એ જ સુખ સૌ સખીઓને એક સાથે પ્રાપ્ત થયું કે જાણે મારા પ્રાણ પ્રીતમે મને જ પોતાની બાહોમાં ભરી લઈ મારા અધર પર અપાર ચુંબનની વર્ષા કરી લીધી. એક એક સખીને મારા પ્રાણ પ્રીતમે એક સમાન સુખથી લબાલબ ભરી દીધી. સભી બધી જ રૂહોને જાણે મનના મનોરથ પૂર્ણ થઈ ગયા એવા સુખ પ્રાપ્ત થયા. અને હવે મારા પ્રીતમને भोजन आरोगावा माटे बीच ऐसे अवसर के लाडबाई आगू युगल किशोर के आई और अरज कुंवर कलेव के ल्याई. लाडबाई आगर आवी गया. कौन लाडबाई? आपणे ज तो छीए. कुंवर कन्हैया मारा प्राण प्रीतम ने आगर आवी अने कीधु श्री राज श्यामाजी ने आज्ञा करी. लाडबाई सकल समाज अपने लेके राज श्यामाजी के चित्त चाहे सकल पकवान के ले आई. त्या देहलान में प्रीतम ने आसन बिछावी, पाटला बिछावी. लाडबाई दुल्हा दुल्हन नी आज्ञा पामीने पोताना जुत्थ साथे कई प्रकारना व्यंजन, मिठाई, फल, फूल दौड़ा दौड़ चाली रही है. कई विध के मिठाइयां, कई कोट विध के पाके पकवान और कई कोट विध के कंदमूल, फल, फूल, बेल, पात और कई कोट विध के अथाने आद अनाद के अघट अटूट अनंत अपार नंगन के अनंत अपार बासनों में बने बनाए सद्य हाथ ताते हर भूम से लबालब है और तैयार मौजूद है. क्यांय कशुं बनावानी जरूर नथी. परमधाममां रांधवुं पड़तुं नथी, खावुं पड़तुं नथी. भोजननी परमधाममां आवश्यकता नथी. रूहना चित्तमां सेवा प्रेमनो भाव छे. प्रेमनी लीला करवी छे अने ए प्रेममय लीला माटे राजी के छे अनंत कोट पकवान, मिठाइया, कंदमूल, फल, फूल, बेल, पात, कई कोट विध के अथाने अने पाछा केवा आद अनाद के. आहा क्यारे घटे नहीं एवा अघट अटूट तूटे नहीं एवा अनंत अपार नंगन के. नंगोना अनंत अपार वासणों में कोई कटोरी, कोई मोटा वासन, कोई तपेली, कोई कई प्रकारना नंगना वासणों, कोई मोतीना, कोई हीराना, कोई माणिकना, कोई नीलवीना. एमां अनंत प्रकारना वासणों अनंत प्रकारना व्यंजनों अने केवा बने बनाए सद्य तैयार ज छे. बनावानी आवश्यकता पण नथी. वफहात ताते ताजा अने गरम गरम हर भूम से लबालब है. बधी ज भूममां भरेला छे. आ तीजी भूममां नीचेथी लेवा जवानी जरूर नथी. त्यां ज तैयार छे और तैयार मौजूद है. सखी 12,000 एक ही बासन में से एक ही जिनस भर लेती है. परमहंस महाराज सुंदर साजी एटली सुंदर बात करी रह्या छे के अनंत प्रकारना व्यंजन, मिठाई, शाक, तकरारी, कई प्रकारना अथाणा बधुं ज एक ज वासण अने ए वासणमांथी तमे जे वासण लईने जाओ छो एमां तमे भरो छो तो तमारा चित्तमां जे छे ए ज ए वासणमां भराय छे.
હજાર વાસણોમાં હજાર વાનગીઓ નથી. એક જ વાસણમાંથી તમે કોઈ પણ વાસણમાં જ્યારે કઈ વાત લો છો તો તમે ચિત્તમાં મીઠાઈ લીધી છે તો એ જ વાસણમાં મીઠાઈ છે. કંદમૂળ તો એ જ વાસણમાં કંદમૂળથી આવે છે. શાક તકરારી તો એ આવે છે. અથાણા તો એ આવે છે. પાપડ તો એ આવે છે. एक ही जिनस भर लेती है, उस वासन में वही जिनस जैसी की तैसी किनार से लबालब है. અને જે વાસણમાંથી આ કોઈ પણ વ્યંજન આપણે આપણા વાસણમાં ભર્યું તો પેલા વાસણમાં કંઈ ઓછું થતું જ નથી. કિનાર લબોલબ ભરી, કેમ કે પૂરણ છે. પરમધામ પૂરણ બ્રહ્મ છે, સંપૂર્ણ છે. ત્યાં વધ કે ઘટ ક્યારે પણ હોતી જ નથી. और इन रूहों ने चित्त चाह्या अपने भर ही लिया. મને જે પ્રીતમને જમાડવાનો ઉમંગ હતો એ મારા વાસણમાં ભરી દીધું. જેને ખીર ભરવી હતી એને ખીર મળી ગઈ. જેને મીઠાઈ ભરવી હતી એને મીઠાઈ મળી ગઈ. એક જ વાસણમાંથી મને મારા વાસણમાં મારી ચિત્ત ચાહી વાનગી, અને છતાં પણ જે વાસણમાંથી મેં કાઢ્યું એ તો કિનારા સુધી લબાલબ ભરેલું છે. જે મેં કાઢ્યું એ તાજું, ગરમ, શ્રેષ્ઠ, સુંદર, સુગંધિત, અનેક રસોથી ભરેલું. કોઈ કમી પરમધામમાં છે જ નહીં. એવી રીતે કઈ કોટ વિધ કે ભોગ હૈ સો દુલ્હા દુલ્હીન ને ચિત્ત ચાહે પાએ. આવા અનંત અનંત કોટી વ્યંજનોને હું તો પ્રીતમને સામે જ બેસી ગઈ હતી. સૌ સખીઓ પોતપોતાની કટોરિયા ભરી ભરીને દોડે છે અને હું એ કટોરી મારા હાથમાં લઈ મારા હાથેથી મારા પ્રાણ પ્રીતમને, મારા હાથોથી શામા દુલ્હીનને એક એક કોળીઓ ભરી ભરીને હું જમાડી રહી છું. કઈ પ્રકારના વ્યંજન પ્રીતમને આગ્રહ કરીને, માન કરી કરીને પ્રીતમને જમાડી રહી છું. पीछे समस्त साथ ने चित्त चाहे पाए, प्रसाद फिर जुगल स्वरूप जुगल बीड़ा आरोप के और 12,000 बीड़ा 12,000 सुंदर को बख्श दिया. मारा प्राण प्रीतम ने आरोग आवीने 12,000 सखियों भोग आरोगी लीधो. त्याने त्याज हरेक भूमनी अंदर आवा अनंत प्रकारना व्यंजनो लबालब भरेला छे. क्याय कसी कोई बात क्याय लेवा जवू पड़तुं ज नथी. अर्शमां हर चीज चित्त चाही. ज्यारे चित्तमां लईए ते ज क्षणे ए वस्तु आपणा हाथमां अगाउथी तैयार थईने प्राप्त थई जाय छे. मारी प्राण प्रीतम प्राणनाथ અને સુંદરબાઈ અરે મારી શામાજ મહારાણીને આરોગાવીને આપણે સૌ 12,000 સખીઓ ભોગ આરોગી લીધો. અને પછી મારા પ્રાણ પ્રીતમને એક પાનનું બીડું મુખમાં મૂક્યું તો મારા પ્રાણ પ્રીતમે એક એક રૂહના મુખમાં એક સાથે 12,000 ને પાનના બીડા ખવડાવી દીધા. પોતાના હાથે મારા પ્રાણ પ્રીતમે મારા મુખમાં પાનનું બીડું મૂકી આપ્યું. और अत्यंत मीठी लटकनी चाल से बीच गले दुल्हन प्यारी के गलबहिया डाल के આવી રીતે બધાને પાન બીડા આરોગાવીને મારો પ્રાણ પ્રીતમ હવે ઉભા થઈ શામા દુલ્હીનના ગળામાં હાથ નાખીને
मतवाली चालथी जाने नृत्य करता करता चालता होय, नर्तकी गते भरते भरते तानन पर भाव धरते। कई संगीतना सुर लहरीओ અને એ સુર લહેરીઓ ના પ્રમાણે પોતાના પગને ચલાવતા પાવ ધરતે ધરતે એવી રીતે ચાલતા ચાલતા बीच नीले पीले मंदिर में दाखिल हुए। આવી રીતે મતવાલી ચાલથી દહેલાનમાંથી મારા પ્રીતમ શ્યામા મહારાણીના ખભે હાથ મૂકીને नीले पीले मंदिर ने अंदर दाखिल थया और छजे चांदनी चौक को पीठ देके मंदिर के मेहराब के सन्मुख होके बीच जरोखे के ऊपर सिंहासन के ऊपर विराजमान रहे। नीला पीला मंदिर नी बाहर जरोखा ने पीठ दईने द्वार सन्मुख लईने त्या सिंहासन આવી ગયું અને દુલ્હા દુલ્હીન इस सिंहासन पर विराजमान થઈ ગયા। હવે હું શું કરી રહી છું? आगे नवरंगबाई नृत्य करने लगी। त्याज तीजी भूमनी दहलान थी अगर नृत्यनी हवेली त्या नवरंगबाई नो जुथ नृत्य करवानुं शुरू થઈ ગયું। तीन सब सखिया पीछे नवरंगबाई के गावने बजावने लगी। बाकी सखियां नवरंगबाई ની સાથે સાથે જ કોઈ ગાવા લાગી, કોઈ બજાવવા લાગી। कोई सखी मृदंग को बजावती है, कोई मोटू ढोलक मृदंग को बजावे छे, कोई सखी खमाईचे बजावती है, कोई खमाईचा बजावे छे, कोई बिना रबाब तंतु वाद्य वगाड़ी रही छे, कोई बेन सहनाई फूंकती है, कोई शहनाई शरणाई वगाड़े छे, कोई करताल मंजीरे गीड़ घोड़ो बजावती है और जल तरंग पानी वासण में पानी भरी अने एना ऊपर दांडी थी मस्त तरंगो मस्त संगीत वगाड़वानुं। कोई श्रीमंडल को जस्ट लाइक तंबूरो आवे एने कह्युं छे श्रीमंडल को बजावती है और अनेक बाजे बजाती है और भी अनंत बाजे हैं। जेटला बाजिंत्रो आ संसारमां छे एना करता अनंत अनंत गणा बाजिंत्रो अने एक एक कलामां 12,000 सखीओ पारंगत छे। आवा अनंत संगीतना ए साधनो बाजी रह्या छे। सो जोन छिन्न पल को जो राग तान है, सो खिन्न पल पल 8 प्रहर 64 घड़ी बिना ही बजाए बाजत है। हर पलनो एक राग अलग होय छे। जेम प्रातः कालनो राग भैरवी होय एम हर पलनो राग अलग अलग। अने जे पले जे राग गवातो होय एज पले ए संगीत आप मेळे वाजिंत्रमांथी एनी सुरावली निकळ्या ज करे छे और अनंत कोट ताने गाते हैं बिना बजाए ही। आ वाजिंत्रो स्वयंभू पोतानी अंदरथी एवा अनंत सुंदर स्वर लहरीओ उपजावी रही छे। अब बीच नीले पीले मंदिर के मंडल नृत्य का बंधा। अब त्यागर नृत्य नो एक मस्त माहौल बनी गयो। तीन सब सखी जो स्वर श्री नवरंगबाई के स्वर में मिले और बाजों के स्वर में एक एक सूत्र भय। जो सखी गावा वाली छे, कोई सखी एने झीलवा वाली छे और भूषणों के स्वर एक में एक। पगमा झांझर अने घुघरी एवी बाजे छे ज्यारे संगीतनी जरूर छे एज प्रमाणे आभूषण पण एक साथे स्वर लहरीओ अंदरथी उत्पन्न थाय छे।
कोटी मृदंग खमांच बिना रबाब सितारे बेन शहनाई कठलाल मंजीर जल तरंग श्रीमंडल डोरू आपस में मिल गई। बधाज वाजिंत्रोना स्वर आपस में एक साथे एक बीजाने लयबद्ध तरीका थी एक साथे संगीतनी लहरियों उठवा लागी। कई कोट बाजे मिलके एक बाजा हुए। एक बाजामांथी आवा अनंत स्वर उठवा लाग्या। ऐसे कोटान कोट बाजे जुदे जुदे तीन सबों के स्वर एक सूत्र होके श्री नवरंगबाई के स्वर में मिल गए। આવી રીતે અનંત વાદ્યોના સ્વર નવરંગબાઈના સ્વર સાથે મિલન થઈ ગયા। अनंत कोट बाजो और भूखनो कई कोट जवेरो की पुतलियों के ताल स्वर राग तान एक भई ताल स्वर राग तान का एक मंडल बंध रहा। एवं एक समा बंधाई चारे तरफ एक साथे संगीत तान स्वर अने आवाज संगीत समान रूप थी एवी सुंदर शोभा बनवा लागी। दसों दिशे महासुंदर अमृत महामीठे डोर स्वरन के खींच रहे अने दसों दिशा में आ संगीतनी सुर लहरियों उठवा लागी। दसों दिश विषे सुधा रस बरस रह्यो अने दसों दिशा में आ संगीत नो रस बरसवा लाग्यो। दसों दिशे महासुंदर अमृत ते महामीठे डोर खींच रह्यो। बीच आसमान जमीन के प्रेम रस महा आनंद को एक सुधा सिंधु मचक रह्यो। ताता थई होई रही। संगीत अने नृत्य एक साथे एटली सुंदर समा बंधावी गई अने हूँ पण ए संगीतनी सुरावलीओ वच्चे ताता थई 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 कार करती नृत्य करवा लागी। श्री राशि ઠાકુરાણી जी मग्न हो रहे अने प्रीतम मारी सामू ज जोई रह्या छे। मारा नृत्य अदाओ पर मारा प्राण प्रीतम फिदा छे। मारी सामे ज जोई रह्या छे मग्न थई गया छे। सुंदर साथ सकल मगन रह्यो। बधा ज आ संगीतनी स्वर लहरी में मगन थई गया। और हवेलिया माहौल मंदिर दल दीवाल थंभ जंजरी जरोखा चौक चबूतरे आखू परमधाम आसमान से जीमी लग। ज्या ज्या स्वर लहरियों पाची बधाज एनी अंदर एवा गलतान थई गया। आटलू सुंदर संगीत आटली मीठी स्वर लहरियों अने नृत्यनो थई थई कार आखा परमधामनी अंदर चारे तरफ पहुंची गयो। पशु पंखी बंद बगीचे मगन हुए। ज्यादा संगीतनी स्वर लहरी पहुंची बदा परमधामनी एक एक न्यामत मग्न थई गई। सो आपको भूल के माशुक के अनंत गुण छवि समुद्र में डूब रहे। આવી રીતે બધી જ પરમધામની ન્યામતો આ સંગીતની સ્વર લહેરીમાં ડૂબીને મારા પ્રીતમના પ્યારમાં ડૂબી ગઈ। तब पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत तरफ चांदनी चौक के फेरे। एज वखते अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में आव्या। 5 पाव पल में 9 लाख कोस जमीन लांग के वास्ते मुजरे माशुक के चांदनी चौक में अक्षर ब्रह्म आए। प्रीतमे नजर थी अक्षर ब्रह्म ने नजर मिलावी दी। अक्षर ब्रह्म ने मुजरा बजाया और मुखारविंद का दर्शन पाया। फिर उसी पल में अपने घर चले गए। बस आटली वार में अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में आवी मारा प्राण प्रीतमना मुखारविंदना दीदार करी पाछा पोताना स्थाने पहुंची। श्री अक्षर ब्रह्म जिनकी किंचित नेत्र भ्रमण में अनंत कोट ब्रह्मांड अपनी अपनी पूरी आरबले भुगत के उपज के खप जाते हैं। आ अक्षर ब्रह्म केवा छे एनी एक पलकनी अंदर
આવા અનંત બ્રહ્માંડો અનંત વાર ઉપજે છે, પોતાની લીલાઓ પૂરી કરે છે અને સમાપ્ત પણ થઈ જાય છે। और उनकी पावपल पूरी नहीं होती, पण अक्षर ब्रह्म ની पावपल પણ પૂરી થતી નથી। रात दिन 64 ઘડી यही लीला करबो करत है ने अक्षर ब्रह्म આવી રીતે આ બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ અને લયની લીલા करता જ રહે છે। खेल की सूरत से और दूसरी विलास की सूरत से रात दिन 64 घड़ी श्री राजश्री ठाकुरानी जी के ध्यान में मगन रहते हैं અને અક્ષર બ્રહ્મ 24 કલાક આવી રીતે રાજ્ય અને શામાજીની ચિત્તવનમાં એમની સુરતનું ધ્યાન કરવામાં મગન રસ મગન ડૂબ્યા જ કરે છે। આવી પરમધામની અંદરની આપણી તીસરી ભૂમની અપાર સુંદર લીલાઓમાં આપણે ડૂબી જઈએ। ધ્યાન ચિત્તવનમાં તીસરી ભૂમ પ્રાણ પ્રીતમ સાથે કરેલી આવી અનંત લીલાઓ આપણને હંમેશા દિલમાં વસી જાય। ચિત્તવનના માધ્યમથી એ લીલાઓને યાદ કરતા કરતા આપણે પ્રીતમ સાથે મસ્તીમાં ડૂબી જઈએ। આ આપણું ચિત્તવન છે। મનમોહન રસાનંદ સાગરની અંદર પરમ પૂજ્ય પરમહંસ જુગલદાસજી મહારાજે આ જે લીલાનું વર્ણન કર્યું છે એ લીલા ત્રીજી ભૂમની અહીંયા આગળ આપણે પૂરી કરીએ છીએ। બાકી લીલાઓ તો અનંત પરમધામની અંદર છે, એનો પાર નથી, પરંતુ પ્રેમમય લીલામાં ડૂબવા માટે જુગલદાસજી મહારાજે જે આ વર્ણન કરીને આપણને બતાવ્યું છે, આગળ આપણે સૌ એ જ મનમોહન રસાનંદ સાગરને વાંચીને સમજીને એ ચિત્તવનમાં ડૂબેલા રહીએ। આજે મનમોહન રસાનંદ સાગરની ચર્ચા સમાપ્ત સંપૂર્ણ કરું છું। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય। प्रणाम सुंदर सर जी।